Okay, so I welcome you all again into today's class, and today we would be studying about arithmetic progression. We have already seen what is the general term of an AP. Also, we proved the sum of an AP, how to calculate the sum of an AP. So today we will solve few questions and see how these formulas are applied. First of all, I am writing down the formula which we have read, and in that we already saw that the general term or the nth term of an AP whose first term is A and the common difference is D is given by this formula. We have already seen the proof of this formula, how this formula came. Then we also saw we can write down the sum of an AP as n by 2 2a plus n minus 1 into D, and we also wrote this down as n by 2 first term and the last term. So today basically we will be solving few questions on it. These all have been asked in your boards, and basically mostly they have been asked in your boards, otherwise they are like some conceptual questions. So I hope you all are well versed with this formula. ये formula सबको याद है. So अब now let's start solving the question. And the first question of today's class is, which term, please note this down, which term of an AP, and then AP is given to you, that is 21, 18, 15, 21, 18, 15, which term of an AP, let's write down this in bracket, dot, 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 is 0. So they have given you an AP and then they are asking that which term of this AP is 0. So actually what they are asking 0 will come at which place in this AP. So let's analyze this AP. We are given with an AP. The first term is 21. This is the solution for it. The first term is 21 and the common difference. Common difference is what? It is T2 minus T1 or T3 minus T2. Okay. So what is T2 here? T2 is 18 minus T1. That is the first term, or A you can say. So this comes out to be equal to minus 3. Clear? Any doubts? Any doubts in this? So the common difference comes out equal to minus 3. Now they are asking which term is of an AP is 0. So we know that T1 here is 21, T2 is 18, T3 is 15. So if I write down the formula for general term, I can say that Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Isn't it? Clear? So the value of nth term, this formula says that the value of nth term is A plus n minus 1 into D. This information is given to us by this formula. ये formula हमें क्या बता रहा है कि अगर हमें nth term निकालना है तो हम ये formula लगा सकते हैं. ठीक? So let us suppose zero is the nth term. Let's say 0 is the nth term. And we know that nth term is given by A plus n minus 1 into D. So 0 is equal to A plus
n minus 1 into d. Can we say that? What is the n here? N is the number of terms. Where? In that AP. Okay. So we are assuming that 0 is the nth term, and we have put a formula that Tn is equal to a plus n minus 1 into d, and Tn is given to us as the 0. This is the value of nth term. Huh? So value of nth term is 0. Now let's put the values here. So 0 is equal to, in place of a, what we can do? We can put 21 plus n minus 1 into minus 3. Take 21 to the left hand side. Now this is pure maths. Algebra, pure algebra, solving of an equation. Cancel this out. 7 is equal to n minus 1, and n becomes 8. So this means that the value of n is coming out to be 8. So it means that 0 is lying at which position? It is lying at the 8th position. So it is which term? It is the 8th term. So 0 would be the 8th term of an AP. Excuse me. Is it clear? Okay. Now let's move ahead and deal with the next question. And the next question is, just let me rub it. The question is, for what value of p? Question is, for what value of p are 2p plus 1, 2p plus 1, comma 13 and 5p minus 3 are consecutive terms of AP. मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी AP है जिसमें कि 2p plus 1, 13 and 5p minus 3. ये क्या है? These are consecutive terms of an AP. Which means that suppose this is some first term, this is the second, this is the third, even anything. The bottom line is they should be consecutive. So if they are consecutive term of an AP, so the common difference between these two, that is 13 minus the previous term, that is 2p plus 1, should be equal to 5p minus 3 minus 30. भाई ये अगर पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. सपोज दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो जो दूसरे टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस होना चाहिए थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में. क्लियर? लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन क्विकली. 13 minus 2p minus 1, it becomes 12, is equal to 5p minus 16. ठीक है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस साइन दोनों जगह पहुंच जाएगा. अच्छा, let's bring 16 to this side. This becomes 28 is equal to 7p, and the value of p is 4. This was again asked in your board exam in 3 mark. See, very conceptual based question. 3 terms are given. What is an AP? An AP is a series in which the common difference between two successive terms is different, is same. मतलब कि आने वाले अगल बगल वाले दोनों टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस होती है, दैट इज सेम. वेरी इजी क्वेश्चन, isn't it? बेसिक क्वेश्चन हमने कर चुके हैं. फाइंड द सेवेंथ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, वो सब तो हम कर चुके हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन.
Okay, now a very good question. How many two digit numbers are divisible by 3? How many two digit numbers are divisible by 3? अब तुम गिनने शुरू हो जाना, 12, 15, 18, 21, 24 पढ़ देना और कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये थोड़ा एपी से भी सॉल्व होता है, देखो कैसे। जो पहला टू डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होता है, 3 की टेबल देखो तो क्या होती है, 3, 6, 9, 12, मतलब कि पहला नंबर डिविजिबल है, टू डिजिट, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर कौन सा डिविजिबल होगा 12 से? 15, 18, मतलब 3 के डिफरेंस पे आते जाएंगे। कहां तक जाना है? टू डिजिट, मतलब 100 के पहले रहना है। 100 के जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है? 9। 100 डिविजिबल है 3 से? नहीं, 100 तो नहीं है। सम क्या, 1 + 0 + 0, डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ेंगे ना। अरे सबको पता होता है कि 99 is divisible by 3। तो मतलब कि एक एपी बन रही है जिसका कि पहला टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है 15, और लास्ट टर्म, आई से इट, लेट मी राइट डाउन, लास्ट टर्म है क्या? 99। ठीक, लास्ट टर्म है 99। अच्छा, सपोज एक एपी है 12, 15, 18, ठीक, इसमें लास्ट टर्म क्या है? 18, लास्ट टर्म है 18, मतलब 18 कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है 18, और 18 ही लास्ट टर्म भी है। तो अगर हम पता कर लें कि लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, मतलब विच टर्म इट इज इट फर्स्ट, इज इट सेकंड, इज इट थर्ड, इज इट फोर्थ, तो हम बता देंगे कि कितने टोटल टर्म्स हैं। देखो भाई, 18 यहाँ पे कौन सा है? थर्ड टर्म, जो कि लास्ट टर्म भी है। तो इस नीचे वाली 12, 15, 18 में कितने टर्म्स हैं? 3। तो अगर हम पता कर लें, अगर हम पता कर लें कि 99 कौन सा टर्म है, which term it is, which term, then we can calculate the number of terms in an AP. Easy, isn't it? So let's again write down the general formula. Let us say, अब ये जीरो वाला जो क्वेश्चन किया था एकदम ऐसा ही, let us say 99 is the nth term. Nth term मतलब we can say that Tn is equal to 99। ठीक, 99 लास्ट टर्म है, हमने उसको nth टर्म फाइंड किया और हम पता करेंगे कि 99 कौन सा टर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। जो सभी टर्म आएगा उतने ही टर्म से बी में हो जाएंगे। तो इसका मतलब उतने ही नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। तो लेट्स अगेन डू a in place of tn I will write down a plus n minus 1 into d is equal to 99. Now a is 12 plus n minus 1. अच्छा, d I have written 15, sorry, d would be 3. 15 minus 12, 18 minus 15 is equal to 99. Take 12 to the that side, n minus 1 into 3 is equal to 87. N minus 1, 3 will divide, it becomes 29. N is equal to 29 plus 1, that is 30, which means that, and the value of n we have calculated to be 30, which means that T30 is equal to 99. इसका मतलब 99 is the 30th term. 99 is the 30th term. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 30th। तो इस एपी में कितने टर्म्स हो गए? 30 टर्म। 30 टर्म्स आर देयर in this AP. 30 terms in this AP.
तो इसका मतलब कितने नंबर है सीरीज में? 30 नंबर है। ये हमने कौन सी सीरीज बनाई थी? जो नंबर 3 से डिविजिबल थे। तो इसका मतलब कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है? 30। 3 का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? चलो ट्राई करते हैं। हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 3? How many 3 digit number are divisible by 3? पहला कौन सा नंबर होता है 3 से डिविजिबल? 100 होता है। सबसे छोटा 100 नहीं, 100 लिखा, सम कितना आ रहा है? 1 नहीं होता है। 101 में 2 आ रहा है, 102 में 3 आ रहा है। 1 plus 2 1 plus 2 is 3। इसका मतलब 102, 102 is the number which is divisible by 3। अगला क्या होगा? 3 बढ़ा दो, 105, 108, कहां तक जाना है? 3 डिजिट। तो हम 1000 के पहले देखेंगे ना। 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इससे जस्ट पहले कौन सा आता है? 999। 9 plus 9 plus 9, that is 27। So this is an series written for the numbers which are divisible by 3। 102, 105, 108, 111 ऐसे करते करते 999, 999 तक we'll go। अच्छा, again this is an AP। why? Because the common difference is again 3 obviously 3। यहाँ पे भी 996 रहा होगा इसके पहले, तो यहाँ भी 3। so it is an AP such that A is equal to 102, common difference is equal to 3, and last term is 999। तो अगर हम पता कर लें कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितने टर्म्स लिखें, कितने सारे टर्म्स हैं, है ना। जैसे पिछला एग्जांपल देखा था, मान लो 102, 105 और 108 है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। तो हम अगर पता कर लें कि 108 इस सीरीज में कौन सा टर्म है, तीसरा है, तो इस सीरीज में 3 टर्म्स है, क्योंकि ये लास्ट टर्म पता कर लिया हमने। तो ये लिख भी सकते हो आप, इन ऑर्डर टू get to know the number of terms of an AP, in order to get to know the number of terms of an AP में कितने टर्म्स है इनकी संख्या को पता करने के लिए, अगर हम ये पता कर लें, if we find out that the last term is the which term of an AP, मतलब जो लास्ट टर्म है, जो आखिरी संख्या है, आखिरी टर्म है, पद है, वो कौन सा टर्म है। So let's call 999 as the nth term, and then we find out the value of n। So Tn is equal to 999, a plus n minus 1 into d is equal to 999, a is 102 plus n minus 1 into 3 is 999। Let's solve it. N minus 1 into 3 is, let's cancel this out, 7, 9, 8, 9, 7। Then n minus 1 is equal to 299 and n is equal to 300। So there are 300 3-digit numbers which are divisible by 3। तो हमने क्या किया, हमने एक AP बना दी और उसमें ये पता कर दिया कि लास्ट टर्म जो है ये कौन सा टर्म है। क्लियर? एनी डाउट्स? नहीं होना चाहिए। काफी बेसिक तो नहीं, एक लेवल के क्वेश्चंस, लेवल 1 मान सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हम जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं, बार बार फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं कि let's a very basic question, general series question। an is given to you, since it has been asked in your boards, so I am giving you this question। an is equal to n into n minus 3 divided by n by 4। now find the 18th term, find 18th term। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्कर या 1 मार्कर्स में, तो अब तो MCQ भी आने लगे शायद।
तो ये कुछ नहीं है इसमें, 18th टर्म मींस व्हाट, ये डिनोशन होता है, इस तरह से डिनोट करते हैं A18। तो A18 फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, पुट n is equal to 18, put n is equal to 18, so A18 is equal to, जहां जहां n लिखे 18 पुट कर दो सर, तो क्या हो गया 18 into 15 upon 22, कैंसिल कर दो 11 9 15 9 135 बटे 11 से मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके लिख सकते हो, ये आंसर आ गया। अच्छा सपोज इसी में एक और वेरिएशन कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में यही रहने देते हैं, बस एक ये वेरिएशन करते हैं, ये हो गया होगा, प्लीज नोट दिस डाउन, वीडियो रोक के आप नोट कर लेना। अच्छा अब सपोज दिया है an+2 मान लो लिखा है, an+2 is equal to, an+2 की डेफिनेशन दी है, अब आपको फाइंड करना है 18th टर्म अगेन, find 18th term, so actually what we have to find, we have to find A18, A18 निकालना है ना, तो A18 निकालने के लिए इस जगह पे 18 होना चाहिए, यहाँ पे n+2 लिखा हुआ है, तो n+2 की जगह 18 आना चाहिए, इसका मतलब n should be 18 minus 2 which is equal to 16, so if you put n is equal to 16 here, what you get, A16 plus 2 is equal to 16 into 16 minus 3 upon 16 plus 4, तो अब जब आपने n को 16 रखा तो एक्चुअली व्हाट यू आर गेटिंग A18, A18 इस तरह से मिल जाएगा, so it is just that denotion, you should know that A1 is the first term, A2 is the second term, तो आपको यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में चाहिए होता है वो नंबर, आप जो सा टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़े सम की, so very basic question, let's start the very basic question again, find the sum of first 8 multiples of 3, find the sum of first 8 multiples of 3, ठीक है, ये पता करना है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं इसके, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये होते हैं मल्टीपल्स ना, 8 हो गए ना ये। अब इनका सम कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले तो देख लो भाई क्या बन रही है, एपी बन रही है, यहाँ भी 3 है कॉमन डिफरेंस, 3 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये एपी बन रही है। क्या होता है एपी का फॉर्मूला, Sn is equal to n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सिंपल है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 into 3 plus 24 is equal to 27, 4s are 108, ठीक है, क्लियर। बेसिक क्वेश्चन आएगा, एक ना एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फॉर्मूला का सिंपल एप्लीकेशन है। अब थोड़ा इसका एडवांस्ड वर्जन देखते हैं। If the sum of first n terms is n square, if the sum of first n terms of an AP is
square, then find out its 10th term. Find its 10th term. एक एपी दिया है जिसके कि फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है आपको n स्क्वायर के बराबर, एंड देन यू हैव टू फाइंड इट्स 10th टर्म. ये मेरे ख्याल से 2018 में क्वेश्चन आया था और मोस्ट लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया था, स्किप किया था, चॉइस में था क्वेश्चन. क्यों देखते हैं? तो पहले टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है, Sn. क्या होता है फॉर्मूला, n/2 t1 प्लस tn होता है. तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. किस तरह से अप्रोच करेंगे इसको. Sn दिया हुआ है हमें n स्क्वायर के बराबर, ये फॉर्मूला तो बाद की बात है. Sn दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूले पे नहीं टूट जाना है. Sn दिया है n स्क्वायर. कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ S1? 1 square, isn't it? What will be the value of S2? Just asking that S2, so put n is equal to 2, this becomes 2 square which is equal to 4. मतलब कि sum of first n terms, now put n is equal to 1, so sum of first term of an AP is 1 square. So if the sum of first term is 1 square, which is equal to 1 actually, so what is the first term? There is written like this is an first term, and you are saying the sum of this term is 1, so obviously this is the first term. T1 is equal to Sn, we can say that. In an AP, suppose there is an AP given to you 2, 5, 8, and I ask you to find the sum of its first term. Actually this statement is not correct, but the sum of first term is the first term. In fact, जो पहले टर्म का सम है वही पहला टर्म है. 2 को किसमें जोड़ोगे? अच्छा, sum of two terms is 4. So let us say the first term is 1 and the second term is T2, and S2 is given to us as 4. We have calculated it out from this formula. Now I can say that 1 plus T2 is equal to 4. Can I say this? Sum of two terms is 4. Why? Because the formula is given. So 1 plus T2 is equal to 4. Isn't it? Okay. So T2 is equal to what? 3. 4 minus 1. Okay. I have found out two terms. I know that it is an AP. The question has given. I don't need to find the third term. I can say the common difference is 3 minus 1. T2 minus T1. D is what? T2 minus T1. So this becomes equal to 2. 3 minus 1. Okay, now I know A, I know D. Can I find out the 10th term? What is D10? What is Tn? A plus n minus 1 into D. How do you find out 10th term? You need to get 10 here, so put n is equal to 10. This becomes A plus 10 minus 1, that is 90. We know A, 1. We know D, that is 2. The 10th term is 90. अब कुछ लोग क्या करेंगे, सम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to n square. n से n कैंसिल करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a plus n minus 1 into d, और फिर कहेंगे अरे यहाँ तो एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, अब क्या करें? ना पहले टर्म का पता ना डी का पता. तो थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग को खुला रखिए, कॉमन सेंस, सब कुछ कॉमन सेंस पे. So it's a very important question. In fact, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि
The Sn is given, so we can calculate S1, S2, S3, S4, S5, anything we can calculate, S10, anything. We just need to get that value in subscript here. Is it clear? So this was asked in your boards and this can come in competition also. Very basic question. Okay, next question is very favorite question. The sum of first 7 term of an AP is the sum of first 7 terms of an AP is 63 and the sum of its next 7 terms and sum of its next 7 terms is 161. 7th term is 161. The sum of the first 7 terms, the sum of the first 7 terms of an AP is 63 and the sum of its next 7 terms is 161. Find the 28th term. Find the 28th term. क्या अप्रोच रहनी चाहिए भाई इसमें? पहले 7 टर्म्स का सम पता है हमें 63 है, अगले 7 टर्म्स का सम पता है 161 है, 28th टर्म चाहिए। तो अगर हम किसी भी तरह से A और D पता कर लें तो काम बन जाएगा। फर्स्ट टर्म पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा के हम T28 निकाल देंगे। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले 7 टर्म है, लेट सपोज T1, T2, T3, T7 है, इनका जो सम है, ये KP है, इनका जो सम है वो क्या है 63, मतलब T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T7 is equal to 63 दिया हुआ है। अच्छा, and the sum of its next 7 terms, मतलब next 7 terms कौन कौन से होंगे? T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, इनका सम कितना दिया भाई? 161 दिया है। ये तो दिया ना क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन है। अब क्या करें? तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ये पहली इक्वेशन मान लो, दूसरी इक्वेशन मान लो, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? T1 plus T2 plus T3 T7 plus T8 plus T9 T14 is equal to 161, मतलब प्लस 63, हम सॉरी इधर तो जोड़ेंगे ना, तो ये कितना आ जाता है? 1 3 4 6 6 12 2 224, ये हो जाता है 224। So what is this written in blue here? Sum of first 14 terms of an AP is 224. Sum of first 7 terms is 63. क्या फॉर्मूला लगता है भाई? जब कौन से फॉर्मूला लगाया जाए? Sum of first 7 terms. How do I write down sum of first 7 terms? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब तुम पूछोगे आप यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो T1 plus Tn वाला नहीं? क्योंकि वेरिएबल बढ़ जाएगा ना, T1 plus T7 लगाओगे T7 हो जाएगा, T1 plus T14 लगाओगे T14 भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? n और a और d, n भी दिया हुआ है क्योंकि S7 दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है? 7 by 2 2a plus 7 minus 1 into d, कितना दिया हुआ है? 63। S7 की जगह 63 is what is S7 denoting? S7 is denoting sum of first 7 terms. How do you find out S7? Just put 7 in place of n. Now tell me, we calculated the sum of first 14 terms is 224.
S14 is what? S14 is what? 14 by 2, 2a plus 14 minus 1 into d. What is S14 we calculated? 224. So let me write down this equation here. 224 is equal to 14 by 2, 2a plus 14 minus 1 into d. Two equations, two unknown. Can you find out a and d? Let's find this out. So this becomes 126 is equal to 7 to the 14a. 7 minus 1, 6 into 7 is 42d. Clear? And then it becomes, let's cancel this out here only. 224 is equal to 14a plus 13 into 7, 91d. Clear? Now we are again with two equations here. What we can do here is 14a, here is 14a. We can just subtract equation 1 from 2. What I get? 96 is equal to 91d minus 42d. How much it is? Is it 49? Yes. And this is yes. So 126. So 96 is equal to 49d. The value of d is what? 96 by 49. Isn't it? Is there any calculation error? So you can then calculate a, even a. Isn't it? So very basic question. We found out S7, we found out S14, and then we will just use the formula. Isn't it? Clear? Okay. So I'll take one more lecture to cover. There are few more questions, and then this AP would be ended, and then we'll begin with geometric progression and harmonic progression. So till then, hopefully keep on practicing. Take questions from your notebook, if you like, from your book, board's book, any book which you textbook which you are following. And if you have any doubt, you can just comment, and you know that we'll solve. We'll reach out to you within 48 hours and try to resolve your query. So till then, take care. Thank you so much. Bye bye.